आतंकवाद क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसीज, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। The hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies or states, must be fought with full vigor and conviction. Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided under all circumstances. Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. Similarly, religious minorities should never be demonized in the pursuit of domestic political agendas. While the sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without parallel, this scourge continues, unfortunately, to plague our region and remains a serious obstacle to the maintenance of peace and stability. SCO countries must take concerted and immediate actions, both in their national capacities as well as collectively under the framework of SCO RATs to combat the three evils of terrorism, extremism and separatism. Excellencies, the achievement of lasting peace and security in the region is both a common concern as well as a responsibility of all honorable SCO leaders. The goal of sustainable peace, the fundamental rights and freedoms must be guaranteed to all, including those under occupation. Peace and communal harmony should replace violent ultra-nationalism and xenophobic ideologies, especially Islamophobia. Furthermore, we should resolutely oppose divisive policies based on prejudice and discrimination. There should be no place for the willful provocations and incitement to hatred, especially on religious grounds.
The SCO stands for observance of the UN principles of sovereignty, territorial integrity, and people's right to self-determination. We must ensure for these universally recognized principles within the SCO borders for friendly relations among the nations. The UN Security Council resolutions offer us a workable framework for these resolutions of some long-standing disputes in the region. These must be addressed to immediately and settled amicably before it's too late. With more than 40% of the world's population and almost a quarter of the world's GDP, the SCO represents a promising future, if only we can work together to seize it as a team. And VK News, राष्ट्र के नाम।